we have seen the definition of crystal lattice. A lattice is nothing but regular arrangement of building blocks, which can be atoms, ions, or molecules. And we also defined what is meant by an unit cell. What is a unit cell? It is the smallest repeating part of the lattice. It can be two-dimensional or three-dimensional. If you are taking a two-dimensional unit cell, you will get surface. If you are taking a three-dimensional unit cell, you will get the entire volume. Okay. Different types में हम कुछ examples में rectangular unit cell, rhombic unit cell देखा. In case of crystalline substances, you will have interfacial angles alpha, beta, gamma corresponding to the edges A, B, and C. So, कोई भी एक unit cell, you can define different types of unit cells. You can define different types of unit cells with different alpha, beta, gamma, A, B, and C. इनके अलावा a unit cell is also characterized by position of the atoms in the unit cell. Based on the location of the atoms, we have three different types. The atoms can be placed at the corners. The atoms can be placed at the body center. The atoms can be placed at the face center. Okay, these are the possible locations of the atoms. At the corners, at the body center, at the face center. If the atom is present at the corner, what is the contribution? 1 by 8. 1 by 8. 1 by 8. If the atom is present at the body center, 1. 1. At the face center, 1 by 1 by 2. 1 by 2, 1 by 2. half. Okay. Okay. So position of atoms के हिसाब से we have 4 different types: primitive, body centered, face centered, and end centered. Primitive मतलब the atoms are placed only at the corners. Body centered मतलब सब में corners occupy होता ही है. Body centered में अलग से center of the unit cell वहाँ पे भी एक atom रहेगा. Okay, so corners and the body center. Face center में corners along with the centers of all the faces. End centered में corners and pair of opposite faces. Pair of opposite faces के centers पे रहेगा. Okay, कोई दो opposite faces. Not all the faces. Okay. So if you are having 4 different types of unit cells, and if you are having 7 crystal systems, so 7 into 4, 28 variations होना चाहिए था total. Okay. So all 28 variations are not possible because in some of the crystal systems we don't have all different types: primitive, body center, face center, and center. ये सब नहीं रहता है. In cubic you have only primitive, body centered, and face centered. याद कैसे रखना है? सब में primitive तो common है. In cubic C, B, F, tetragonal के लिए TB, orthorhombic के लिए O. O मतलब सारे के सारे है. monoclinic के लिए मी. CTO, MHRT, CTO, MHRT, CBF, TB, O, ME. ये याद किया क्या आप लोग? टेबल. You need to definitely remember this table. You can get a question from this table. CET में भी important है. CET, boards, JEE mains, NEET, सबके लिए important है. Okay. इसके बाद हम थोड़ा basics देखा. A cube has 8 corners, 6 faces, 12 edges, 1 body center. Contribution of an atom at a given location: corner पे 1/8, अगर face center पे रहा तो half, body center पे रहा तो 1, edge center पे रहा तो 1/4. Okay. ठीक है. So let us, हमारे syllabus में analysis we have only for the cubic crystal system. In the cubic you have P, B, F. Primitive है, body center है, face center है. So primitive होके if it is cubic system, it is called as simple cubic, body centered cubic, face centered cubic, which is also called as CCP. Simple cubic, body centered cubic, face centered cubic.
cubic closed packing. CCP indicates cubic closed packing. Okay. Let us start with simple cubic unit cell. इनका एनालिसिस करते हैं. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक जो भी पढ़ा उसमें आपको याद रखने का कोई भी कुछ भी है तो दिस टेबल. ओके. सीईटी के लिए ये एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है. सीईटी में दे विल आस्क कॉपर कौन सा सिस्टम है, क्यूबिक, टिन, टेट्रागोनल, रोम्बिक, सल्फर, ये तो ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ग्राफाइट कौन सा सिस्टम है, हेक्सागोनल. ओके. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. What is the location of atoms in simple cubic unit cell? At the corners. At the corners. Atoms are present at the corners and they touch each other. Touch each other along the edges. Okay. The atoms which are present at the corners, they touch each other along the edges. देखो ये जो एटम है इनको यहाँ पे मैंने सपोज ऐसा चॉप किया तो only 1/8 part of the atom will be present inside the unit cell because at the corners the contribution of each atom is 1/8. So ये 1/8 part को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया आप लोग को. Okay, where R is the radius of the atom, A is the edge length of the unit cell. Cubic में A equal to B equal to C होता है ना. Okay, so if they are touching at the corners, what can you say about the relation between A and R? A equal to 1. Equal to R by 2. Equal to A by 2. R is equals to A by 2 और A is equals to 2R. Okay, ठीक है, good. The location is corners. Atoms touch each other along the edges. Hence I can write A equal to 2R. Okay. What are the effective number of atoms? Effective number of atoms present inside the unit cell. कितने हैं? Effective number of atoms present inside the unit cell, which is also called as rank of the unit cell, which is represented by symbol Z. बताओ, effective number of atoms present inside the unit cell. 1. 1. क्योंकि आपके पास कितने कॉर्नर्स रहता है? 8 कॉर्नर्स. हर एक कॉर्नर से व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? 1 by 1/8.
सो कितना आया 1. ओके, रैंक z इक्वल्स टू 1. इसके अलावा वी आर इंटरेस्टेड इन पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? आप लोग को क्या लग रहा है कुछ? पैकिंग एफिशिएंसी, what do you understand by the term packing efficiency of the unit cell? The pattern of atoms in unit cell. कोई भी यूनिट सेल में एटम्स ऑक्यूपाई होने के बाद देयर आर सम एम्प्टी स्पेसेस ना. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by the atoms divided by the volume of the unit cell. Okay, the volume occupied by the atoms divided by volume of unit cell. So it is nothing but number of effective number of atoms are z. So z into volume of one atom divided by volume of unit cell लिख सकता हूँ. It is nothing but volume occupied by the atoms divided by volume of the unit cell. What is Z for simple cubic unit cell? 1. What is volume of one atom? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube divided by what is volume of the unit cell? A cube. A cube. R के place में can I substitute a by 2? So it is 4/3 pi a by 2 whole cube divided by a cube. 2 cube 8 होता है ना? So this is pi upon 6. Pi upon 6 which is equal to 0.52. Okay, so percentage में अगर देखा तो packing efficiency is 52%. Is this clear? We won't calculate in the exam packing efficiency of simple cubic पूछा तो ये calculate करके हम mark नहीं करेंगे. We will directly remember the result. It is 52%. Okay. I hope this is clear. Okay. So simple cubic में आपको जो भी याद रखना है, the atoms touch along the edges. As a result, A equal to 2R. Effective number of atoms rank is equals to 1 and the packing efficiency is 52%. Okay, let's go to the next. Body centered cubic. Also called as BCC. Okay. In BCC, what is the location of atoms? Corners Plus center center of body. body. Good. Corners and body center. Okay. In BCC, वो जो atoms है, they touch each other along the body diagonal. Atoms touch each other along the body diagonal.
एक बार देखो यहाँ पे, अभी ये सिंपल क्यूबिक हुआ, इसके बीच में एक एटम फिट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ विच इज ऑफ द सेम साइज। इन दैट केस इनके बीच में कांटेक्ट जो है वो ब्रेक होगा ना, इनके बीच में कांटेक्ट ब्रेक होगा और उसके बीच में एक और एक एटम को हम फिट कर रहे हैं। सो कांटेक्ट ब्रेक होने के बाद दैट पर्टिकुलर एटम विल बी इन कांटेक्ट विद दीज एटम्स, इन सारे के साथ कांटेक्ट में रहेगा। सो इफ यू आर सीइंग फॉर द कांटेक्ट, द एटम्स विल टच ईच अदर अलोंग द बॉडी डायगोनल, कॉर्नर एटम, बॉडी सेंटर में जो भी एटम एंड अनदर कॉर्नर एटम। ओके, समझ में आया वो? If I want to mark body diagonals, एक बॉडी डायगोनल हुआ, एक बॉडी डायगोनल हुआ, एक बॉडी डायगोनल यहाँ पे, और शो नहीं कर रहा हूँ, बाकी बॉडी डायगोनल्स भी हमको शो करना पड़ेगा, बट आई एम नॉट शोइंग द बॉडी डायगोनल। सो ये यहाँ पे you are having one of the atom. So if the atoms are touching along the body diagonal, if the atoms are touching along the body diagonal, what is the relation between A and R? First of all, tell me the length of the body diagonal. √3a. Root 3. Very good. If they are touching along the body diagonal, एक एटम है, एक एटम है, एक एटम है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, this is nothing but the length of the body diagonal, which is √3a. यहाँ पे ये R, 2R and R. So what is the relation between R and body diagonal? 4r √3. आया समझ में ये? 4R equals to √3a. Is this clear? Yes. Okay. Can anyone tell me the rank? 2. 2. It will be 2. You have 8 corners. Contribution is 1 by 8. Plus you have one body center. The contribution is 1. So it is 2. Z equal to 2. Okay. Packing efficiency. It will be 2 into 4 by 3 pi r cube divided by a cube. R के प्लेस में
2 into 4 by 3 pi r is root 3 a by 4. अगर आप इसको सिंप्लीफाई किया तो इट कम्स आउट टू बी root 3 pi upon 8, which is 0.68. सिंपल क्यूबिक में कितना है हमको? 52.52. So in this case, the packing efficiency is 68%. Oh, 52% है, 68% है. So out of simple cubic and body centered, which is more closed packing? Body centered. Body centered. Okay. Next, आपको इसमें याद क्या रखना है? 4r is equals to root 3a, z equal to 2, packing efficiency 68%. Last system. Face centered cubic. Tell me the location. Corners plus center of fixation. The corners and face centers. Okay. In this case, face centers में रहने की वजह से atoms का, if I ask you along what line the atoms will touch each other. In case of simple cubic, the atoms touch each other along the edge. In case of body centered, the atoms touch each other along the body diagonal. Face center में क्या लग रहा है आपको? Face में. The atoms touch each other along the face diagonal. Okay, is it clear? Atoms touch each other along the face diagonal. Okay. हाँ. यहाँ तक ये R है. This will be 2R. Again, this part will be R. What is the length of the face diagonal? Root 2. Root 2a. Root 2a. Okay, ये वाला part ये है, ये वाला part ये है. So it will be root 2a. So the relation between R and A is 4R is equals to root 2a. BCC में 4R is equals to root 3a. Okay, tell me the rank. 4. 4. 4. It is
8 into 1 by 8. Number of faces 6. 6 into half. 3 or 3 plus 1 4. Z equals to 4. Okay. Oh. What will be the packing efficiency? 4 into 4 by 3 5. 2 upon 4 into 4 by 3 pi RK प्लेस में डायरेक्टली मैं √2a upon 4 whole cube upon a cube, which is equal to, this comes out to be √2 pi upon 6. फर्दर सिंप्लीफाई किया तो pi upon 3 √2 आता है, pi upon 3 √2, which is equal to 0.74. मतलब कितना परसेंट हुआ? 72. 74%. Okay. So in the cubic system, which particular arrangement has the highest packing efficiency? Face centered. Face centered cubic है ना, hence this is also called as cubic में ही ये सबसे closed packing है, cubic closed packing. The FCC is also referred to as cubic closed packing, मतलब CCP. आया समझ में क्यों इसको CCP बोलते हैं? Because it has the highest packing efficiency. I hope this is clear. Yes. Okay. ठीक है. Next section, density of a unit cell. What is density equal to? Mass upon volume. What will be mass? Mass will be equal to rank into mass of each atom. Mass of each atom कितना रहेगा? उसका molecular weight divided by 1 mole. Okay. So वही हम लिखेंगे. Let the molar mass of the substance is equals to m gram per mole. This implies mass of one atom will be equal to m upon Na. Any doubt? Na का मास m ग्राम से तो एक का मास m upon Na grams, right? Mass of Z atoms, Z indicates rank. Effective number of atoms Z है ना, so it will be Zm upon Na grams, which is nothing but mass of unit cell. If A is the edge length of unit cell, मान लेते हो सेंटीमीटर्स में है, volume of unit cell
will be a cube centimeter cube. What will be density then? Density is equals to mass, which is Zm upon Na divided by AQ, which is nothing but AQ. Gram per centimeter cube. Okay. So with the help of this formula, a density का formula है which you need to remember. Zm upon Na A cube, where Na is the Avogadro number. So आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में they may ask you directly density. For that you will be given the type of unit cell, you will be given the molecular weight, you will be given the edge length. Okay, or you may need to find the edge length. For that they will be giving you the density. From the edge length you can also find radius of atom. If you know the relation between R and A, once you get A, you can find R. Okay. Or they may also ask you to find molar mass, molecular weight. Okay. Or they may also ask you to find Z. If you know the value of Z, you can say type of unit cell. This is done with the help of Z. Okay. And with the help of this, you can also have the estimate for Avogadro number. Avogadro number को cross check कर सकते हैं हम. If you know density, if you know Z, if you know molecular weight, and if you know the edge length, ये सब substitute करके you can get the value of Na. A method to cross check the value of Avogadro number. Okay. Is this clear? ठीक है. कुछ क्वेश्चंस करते हैं. गोल्ड एटॉमिक रेडियस दिया है. (0.144 nanometers). Crystallizes in FCC unit cell. What is its edge length? जल्दी करो.
Answer 4 angstrom. 0.4 नैनोमीटर्स में आएगा. 0.4 नैनोमीटर्स. एंगस्ट्रॉम्स में 4 आएगा क्या? हाँ सर. Okay. What is the relation between R and A for FCC? They touch each other along the face diagonal. So it will be 4R equals to 2A, or A will be equals to 2 root 2 times R. So it is 2 into root 2 is 1.414 into R is 0.144, which equals 0.406 nanometers. Okay. ठीक है. Next question. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में मिलेगा. एल्यूमिनियम जो है, इट क्रिस्टलाइजेस इन CCP लैटिस, मतलब FCC हुआ. इट्स मेटालिक रेडियस is equal to 125 picometers. 1 picometer equal to 10 to the power 10 minus to the 12. power minus 12. 10 power minus 12 meters. What is A of unit cell? B part. How many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminum? How many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminum? करके बताओ. You can leave the answer in terms of picometers.
ए पार्ट के लिए आंसर 3.5. 352.5. 352.5 53. 353 ना 353 okay. Again I can say A is equals to 2 root 2 times R, which is equal to 2 into 1.414 into R is 125 picometers. So this is 353.5 आया 75 आया 5. 5. चलेगा 353.5 picometers. B part के लिए क्या करना है? You need to find the number of unit cells in 1 centimeter cube of aluminium. सर Z पूछा है. Z नहीं पूछा है. Number of unit cells in 1 centimeter cube of aluminium. CCP में Z तो डायरेक्ट हमको पता है ना 4 करके. अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया एल्यूमिनियम का, उसमें कितने यूनिट सेल्स रहेंगे? So for that, 283 into 10 to the power 25 था. नहीं. Find the volume of 1 unit cell. एक यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड करके, इफ यू नो 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम सम x है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना रहेगा? 1 centimeter divided by volume of 1 unit cell. 1 centimeter cube divided by volume of 1 unit cell. So find that volume of the unit cell will be a cube. We know 4r is equals to root 2a. इसको वैसा ही रखते हैं. a is equals to 4r upon root 2. हमको सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए ना. a cube is equals to 4 cube. 64. 64 क्यूब 64 होता है क्या? ओके. 64 r cube upon 2 root 2. ओके, ठीक है. We know 1 picometer is equals to 10 raised to minus 12 meters. 1 meter equal to 100 centimeters ना. So 10 raised to minus 10 centimeters. Okay. So R के प्लेस में हमको पुट क्या करना है? R is 125 दिया ना. 64 into 125 into 10 raised to minus 10 whole cube centimeter cube divided by 2 root 2. ये so number of unit cells will be equal to 1 divided by
ये 32 कर रहा हूं मैं, इंटू √2 डिवाइड बाय √2 किया तो इंटू √2 डिवाइड बाय √2, या √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, so this will be 16. Okay, 16 into 125 cube ये 10 पावर माइनस 30 जो है ऊपर गया तो 10 पावर 30 होगा। ओके, हाँ। और कुछ तो √2 भी है ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो बताओ मुझे। इज दिस ओके? Yes. ओके, सो इसका फर्दर कैलकुलेशन आप करो। 125 है ना, 125 इंटू 125 125 लिखो, ये 1000 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 10 पावर 9 इंटू 10 पावर 21 लिखना बेटर होगा। 1000 डिवाइड बाय 125 ये करना आसान है। ओके, कर सकते हो ना, या करके दिखाओ? Okay. 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 10 पावर 21 divided by 16 into 125 into 125 into 125 into √2 1000 upon 125 कितना होता है? 8. 8 times हाँ. 8 8 8 8 ones 8 twos 2 ones 2 fours, again इसको √2 cancel होगा, 2 times 8 to the 16, so this is 16 √2 into 10 power 21 unit cells. You can multiply the √2 with 1.414 if you wish. 22.62. कितना? 22.62. 22.62 into 10 power 21 unit cells. Clear है? Okay. दो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड है। एजी सिल्वर FCC lattice, you are given edge length A equal to 4.07 into 10 raised to minus 8 centimeters, density equal to 10.5 gram per cc. Calculate the atomic mass of Ag. Atomic mass हमको ऑलरेडी पता है 108 करके, so the answer has to be close to 108. Density दिया है, density दिया है तो you can use the formula rho is equals to Zm upon Na A cube. Get the value of atomic mass of Ag. Next question.
nobelium, BCC lattice. Again density दिया है as 8.55 gram per cc. You need to calculate atomic radius. Atomic mass दिया है 93 mu. These two are based on applications of density formula. Rho is equals to Zm upon Na cube. You can use your calculators at home. Calculators तो use मत करना क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तब आपको कैलकुलेटर नहीं रहेगा. Okay. Next section. Let us see the origin of these unit cells. Origin of unit cells, which is due to closed packing in the solids. Origin of unit cells. And we are assuming atoms are assumed to be spherical. And in close contact with each other. Okay. Give me 2 minutes. Okay. Let us take this as one layer of atoms. Okay. एक layer में है and consider this as layer A. Layer A. Now थोड़ा visualize करो आप लोग. Place second layer such that the centers of these atoms coincide with the atoms of the second layer. जो second layer मैं put कर रहा हूँ, इनके centers और जो नया layer है उनके centers, both of them are coinciding. Okay, मतलब exactly इस layer के ऊपर और एक layer place करने के लिए बोल रहा हूँ. Okay, if you are placing one more layer and if you are chopping it, अगर आप लोग ऐसा कुछ chop कर रहे हैं, will you get simple cubic? मतलब ये वाला पार्ट ऐसे चॉप कर लो, ये ऐसे चॉप कर लो, ऐसे चॉप कर लो, ऊपर ऐसे चॉप कर लो, तब ऐसा सिंपल क्यूबिक मिलेगा ना. ओके, सो ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल arises
because of a simple cubic unit cell arises because of a टाइप ऑफ अरेंजमेंट, मतलब लेयर ए के ऊपर एग्जैक्टली सेम लेयर ए, उसके ऊपर सेम लेयर ए, अगर वैसा पैक करते गया तो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट विल लीड टू द यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब उसमें स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आया? What I am asking is place a second layer such that the centers of atoms coincide with the centers of atoms of first layer. Okay, that will result in simple cubic unit cell. Okay, and इसमें we are also interested in a concept called coordination number of the atom. CN indicates coordination number. Coordination number of the atom. पहले उसका definition देखते हैं, बाद में आप लोग ये बता सकते हो। It is defined as the number of atoms. It is defined as the number of atoms touching a given atom. Touching a given atom. So this is the arrangement of atoms in simple cubic unit cell. मतलब layer A के ऊपर same layer A repeat होता जाएगा. So if you are taking any one given atom, suppose ये वाला atom consider करते हैं. Let us consider this atom. Can you tell me the coordination number of this atom? What is meant by coordination number? It is the number of atoms touching a given atom. In a layer, if I am taking coordination number in a layer, इसको coordination है 1, 2, 3, 4. 4 atoms are touching this given atom. If I am talking about coordination number overall, इसके ऊपर और एक लेयर रखने वाला हूं मैं और इसके नीचे और एक लेयर है. So इसके ऊपर और एक एटम आएगा, नीचे और एक एटम आएगा. So it will be in contact with how many atoms? 6. 6. So coordination number overall, the coordination number of any given atom in a simple cubic unit cell is 6. It will be in contact with 6 other atoms. Okay? और else आपको better visualization के लिए वहां पे हो गया, बट फिर से देखो, ये जो पर्टिकुलर एटम है इसके कांटेक्ट में है 1, 2, इसके बाजू में और एक रहता है ना 1, 2, 3, 4, नीचे 5, ऊपर 6. आया समझ में? एनी डाउट? यहाँ पे 3 एटम से कनेक्टेड है 1, 2, 3, ऐसा ही 1 ऊपर 1, इसके बाजू में 1 और 3. और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, ये बेटर है. दिस इज इन कांटेक्ट विद 4 एटम्स. इसके ऊपर एक लेयर से एक एटम से कांटेक्ट में रहेगा, नीचे लेयर से और एक एटम से कांटेक्ट में रहेगा. ओके, सो
in this, if I'm asking coordination number in a layer, usually coordination number in a layer नहीं पूछा जाता है, overall ही पूछा जाता है. In a layer it is 4. Coordination number of an atom in simple cubic. Will be equal to 6. So overall I will write coordination number equal to 6. What is the arrangement which lead to simple cubic unit cell? A type of arrangement. Okay. Okay. Body centered कैसे बनेगा देखते हैं. देखो इसमें क्या हो रहा है. In this case the atoms are not touching each other. Okay, बीच में spaces है. Because of this can I say यहाँ पे एक groove जैसा form होगा. एक groove बनता है ना यहाँ पे. हाँ. अभी इस groove के place में what I am doing is I will place atoms here. उसको टच करते हुए नहीं दिखाया मैंने क्योंकि आपको सिंगल लेयर जैसे लगेगा. ओके ओके, आई विल यूज डिफरेंट इंक. एक्चुअल में उसको टच कर रहे हैं. ग्रूव है ना, ग्रूव जो बना है उस ग्रूव में इसको इस एटम को प्लेस कर रहा हूं मैं. Two minutes, it got disconnected. ये समझ में आया आपको? ग्रूव्स बना है, उस ग्रूव्स में प्लेस कर रहा हूँ. These things are in contact with these 4 atoms. ये जो एटम है it is in contact with this 4. This atom is in contact with this 4. यहाँ पे मैंने वैसा दिखाया नहीं, but this is in contact with them. Okay. So अभी ये जो ब्लू से मार्क किया है
This is layer A. And ये जो रेड से मार्क किया है, these two are two different layers ना, एक जैसे नहीं है, they are not coinciding. So this is layer B. अभी इसके ऊपर लेयर A, लेयर B, लेयर B के ऊपर फिर से लेयर A प्लेस कर रहा हूं मैं. Again place layer A. In that case, can I say ये जो layer B of atoms है, those will be present between layer A, bottom layer A and upper layer A. दो layers के बीच में ये जो particular layer B का atoms है, वो sandwich हो जाएंगे. हाँ. So can I say that will lead to the formation of body centered cubic? बीच में ये atom है, उसके ऊपर ये layer है, नीचे भी same layer A. So if you are having A, B, A, B type of arrangement, A, B, A, B, A, B type of arrangement, and ये जो packing है, this is square packing. Everyone observe, यहाँ पे भी you are having square packing. Here also you have square packing. देखो, square जैसा है ना ये. So square packing of AB, AB, AB type of arrangement will lead to the formation of body centered units. What will be the coordination number? 8. इसको पकड़ो. This is attached to, or this is in contact with 4 atoms. In a layer below it, in a layer above it, also it will be in contact with 4 atoms. So 4 plus 4, it will be 8. Clear? हाँ. यहाँ पे मैंने अरेंज कैसे किया? Place the consecutive layer in depressions formed by the first layer. Okay, so square packing arrangement of A will lead to the formation of simple cubic unit cell. Square packing arrangement of AB will lead to the formation of body centered unit cell. हमको ये FCC unit cell कैसे बनेगा वो देखना पड़ेगा. Okay, we will understand that in the next lecture. Okay, thank you everyone.